Hello everyone. So today we will going to start the new chapter and the name of the chapter is adverbs. So let's begin the chapter. Chapter 3 adverbs. Let's learn. An adverb is a word which modifies the meaning of a verb, an adjective or another adverb. Read the following sentences. The boy ran quickly. This is a very sweet apple and Karina speaks quite clearly. तो व्हाट इज एडवर्ब? एडवर्ब होता है जो वर्ब को मॉडिफाई करता है या वर्ब में एडिशन करता है. Adverb. So ad means addition to the verb. They have given the three examples. The boy ran quickly. This is a very sweet apple and Karina speaks quite clearly. So here the highlighted words are the adverbs. In sentence 1, quickly shows how in what manner the boy ran. जैसे कि boy ran. So ran is a verb. पर वो कैसे भाग रहा है? तेज. तो quickly will become adverb क्योंकि उसने उसको मीनिंग दे दिया. This is a very sweet apple. This is a sweet apple. लेकिन स्वीट मीठा है लेकिन बहुत मीठा है तो वेरी ने ऐड कर दिया वर्ब में. करीना स्पीक्स क्वाइट क्लियरली. तो करीना स्पीक्स क्लियरली बट बहुत ज्यादा क्लियरली तो क्वाइट. So that is quickly modifies the verb ran. In sentence 2, word very shows how much in what degree the apple is sweet. That is modifies the adjective sweet. The adjective है sweet तो उसको modify किया. And sentence 3, how far. तो यहाँ पर adverb clearly. Karina speaks clearly. तो clearly भी adverb है. That is quite modifies. तो adverb को ही और उसने modify करा. So the words quickly, very and quite are therefore adverbs. Then comes kind of adverbs. According to their meaning, adverbs को हम following kinds में divide करते हैं. Number 1 comes the adverb of time. They answer the question when. Adverb of time बताता है कि ये चीज कब हुई, when. So like I have spoken to her already. Grandpa hurt his knee yesterday. Today you have arrived late. Time once gone never comes again. तो ऑलरेडी, येस्टरडे, लेट, नेवर, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये टाइम को डिनोट कर रहे हैं. तो दिस इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम. देन कम्स एडवर्ब ऑफ मैनर. दे आंसर द क्वेश्चन हाउ एंड इन व्हाट मैनर. लाइक फॉर एग्जांपल, मराठास फॉट ब्रेवली. कैसे लड़े? ब्रेवली लड़े. स्लोली एंड सैडली वी लेड डाउन. स्लोली एंड सैडली. मोहन रीड्स क्लियरली. द स्टोरी इज वेल रिटन. Note, adverb of manner include nearly all those adverbs which are derived from adjective verb end in ly. Adverb of manner include करता है वो सारे adverbs जो हम adjective से derive करते हैं. and basically हम जो adverbs बनाते हैं उसमें ly mostly words में ly लगता है. Then comes adverb of place. ये था तरीका और समय. Then comes adverb of place. क्या होती है? They answer the question where. Place मतलब जगह, कहाँ पर. Like for example, the little lad followed Mary everywhere. सब जगह उसको follow करा. When you came here, he went away there to there and here. Doctor is out. Horse galloped away. Then comes number 4, adverb of frequency. They answer the question how often, कि वो चीज कितनी बार हो जाती है. He often makes mistakes. कभी कभार. He always tries to do her best. वो हमेशा कोशिश करती है अपना बेस्ट. My friend seldom comes है, वो कभी कभी यहाँ पर आता है. I have seen him twice but talked only once. तो twice मतलब 2 बार, once मतलब 1 बार. तो ये डिनोट बताता है कि चीजें कितनी रिपीटेशन या कितनी बार होती है. Then comes the adverb of degree or quantity. They answer the question to what extent, कि how much और कितनी हद तक वो चीज होती है. Like these mangoes are almost ripe. तो almost तो completely एक तरीके से वो ripe है. You seem to be an altogether mistaken. Altogether. The man was too careless. एक हो गया the man was careless, लेकिन बहुत ज्यादा careless तो too. The sea is very stormy today. Very. Now let's do the worksheet. Now here you have to underline the adverbs in the following sentences and write their kinds. So number 1, we are here today and we leave tomorrow. So tomorrow and today. The soldiers go on in the snow sadly and wearily.
Formerly I liked him well, but now I cordially detest him. Do come and see us soon. You so seldom visit us nowadays. Slowly and sadly we laid him down. I wandered lonely as a cloud. The thief crept quietly from the room and closed the door noiselessly. One goes up or else goes down. There is no standing. So like this, you have to underline the adverbs. Now we have to write their kinds. So here, today and tomorrow. So it is mentioning your time. That will be a adverb of time. They are adverb of manner. Then formerly I liked him, but when I cordially detest him, that is, it is an adverb पहले और अब, so time. Then do come and see us soon, seldom, that is adverb of frequency. Then slowly and sadly we laid him down, that is manner. This is manner, adverb of manner you can write. Lonely as a, I wandered lonely as a cloud. Here, manner. Quietly. The thief crept quietly from the room and closed the door noiselessly. Again, manner. Up and down, it is a verb of place. Then comparison of adverbs. Like adjectives, some adverbs have 3 degrees of comparison. जैसे adjective की 3 डिग्री of comparison होती है, उस तरीके से adverb की भी degrees of comparison होती है, वो भी 3. Positive, comparative and superlative. Here are some rules of formation of comparative और superlative degree of adverbs की कैसे बनती है. If the adverbs is one of syllable, we form the comparative degree by adding er and the superlative degree by adding est to the positive. अगर एडवर्ब एक सिलेबल का जो हम बनाते हैं वो कंपैरेटिव डिग्री जो हम बनाते हैं उसमें हम ऐड करते हैं er और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसमें हम ऐड करते हैं est सेम एज वी डू इन दी एडजेक्टिव्स. So the positive degree hard, comparative में harder, hardest, long, longer, longest, soon, sooner, soonest, near, nearer, nearest. एडवर्ब एंडिंग इन एल वाई, कुछ एडवर्ब्स होते हैं जो एल वाई जिनके लास्ट में लगता है, दे फॉर्म देयर कंपैरेटिव डिग्री. उनमें हम कैसे कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, मोर एंड मोस्ट ऐड करके. तो मोर हम ऐड करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में और मोस्ट हम ऐड करते हैं सुपरलेटिव डिग्री में. लाइक फॉर एग्जांपल्स, पॉजिटिव डिग्री में नीटली है तो मोर नीटली, मोस्ट नीटली, स्विफ्टली, मोर स्विफ्टली, मोस्ट स्विफ्टली, क्वाइटली, मोर क्वाइटली, मोस्ट क्वाइटली. Note, however, there are some exceptions such as early, earlier, earliest. जैसे I came early this morning. अब early में ly लग रहा है लेकिन exception केस है. Early यहाँ पर आ गया earlier comparative में और superlative में earliest of all. Example: crow flies swiftly, pigeons fly more swiftly of all the birds, and hawk flies more swiftly than the crow. Then some adverbs are compared irregularly. कुछ ऐसे adverbs होते हैं जिनको irregularly compare किया जाता है, जैसे कि well या फिर good हम बोल सकते हैं, better, best, badly है, worse, worst. तो इसमें badlier या more badly नहीं लिखते. much, more, most, little, less, least, late, later, latest या फिर last, far, farther, farthest. Example: Ram writes well, Hari writes best of all, Arjun writes better than Ram. Some adverbs cannot be compared, such as कुछ ऐसे adverbs होते हैं जिनको compare नहीं किया जाता. Like for example, thus, now, then, here, there, once, twice, very, almost, half, not, consequently. Let's come to worksheet 2. Now we have to write the comparative and superlative degree of these adverbs. तो अभी पढ़ा था हमने well, better, better, best, little, less, least, often,
more often, most often. Long, longer, longest. Late, later, latest. Cleverly, that is more cleverly or more. फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स फ्रॉम एडजेक्टिव. अब एडवर्ब को हम कैसे बनाते हैं एडजेक्टिव. मोस्ट एडवर्ब्स आर फॉर्म फ्रॉम एडजेक्टिव्स बाय एडिंग ly समटाइम्स विद स्लाइट चेंजेस. अब क्या होता है, बहुत सारे एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव से कैसे बनाए जाते हैं ly ऐड करने के लिए. लाइक फॉर एग्जांपल काइंड काइंडली, ब्रेव ब्रेवली, हैप्पी हैप्पीली, स्विफ्ट स्विफ्टली, नाइस नाइसली, ट्रू ट्रूली, क्लेवर क्लेवरली, हेवी हेवीली, नॉबल नॉबली. And some adverbs have the same form as the corresponding adjective. कुछ होते हैं जो बिल्कुल सेम फॉर्म होते हैं, जैसे कि एडजेक्टिव होता है वैसे ही एडवर्ब होते हैं. जैसे कि बॉय इज वर्किंग हार्ड और यहाँ पर दिस एप्पल इज वेरी हार्ड, तो वो एडवर्ब में भी हार्ड है और एडजेक्टिव में भी हार्ड ही है. मे यू लिव लॉन्ग, इट इज अ लॉन्ग डिस्टेंस. अब यहाँ ये एडजेक्टिव है लंबा रास्ता, एंड यहाँ पर आशीर्वाद दे रहा है कि तुम तुम्हारी लाइफ लंबी हो. आई लिटिल एक्सपेक्टेड दिस, आई हैव लिटिल शुगर इन माई टी. Come early, he is an early riser. I have walked far, his house is far from here. Don't talk so loud, children made a loud noise. Ravi can run fast, Ravi is a fast runner. तो ये कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो एडजेक्टिव में भी उनका सेम ही तरीके से लिखा जाता है. Now this is a worksheet. Form adverbs from the following adjectives, use them in sentence. अब इसमें हमें adjectives दे रखे हैं और हमें इनसे adverb बनाना है. तो frequent will become frequently. Usual, usually. Fearlessly. Then now some word formerly. So this is how you have to just make the adverbs from these, like easy, easily, eagerly, wrong. Sometimes the word is not changed, so you have to look for that also. कि adjective और adverb में वो रहता same है, कुछ words ऐसे भी होते. Then use the following words in your own sentences, and one said adverbs and one said adjective. तो इसमें हमें क्या करना है, sentences बनाने, जैसे कि ऊपर दिया हुआ था कि that table was given by them, कि जिसमें आपको इन्हीं वर्ड्स को एज एन एडजेक्टिव भी यूज करना है एक सेंटेंस में और फिर एज अ एडवर्ब यूज करना है. Then comes the position of adverbs. An adverb which modifies an adjective or another adverb is always placed immediately before the word it modifies. अब पोजीशन एडवर्ब की बात करते हैं. एडवर्ब जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो उसको हमेशा कहाँ प्लेस किया जाता है, बिफोर द वर्ड इट मॉडिफाइज, कि उस वर्ड से पहले जिसको वो मॉडिफाई कर रहा है. जैसे डंकी इज अ वेरी जेंटल एनिमल, जेंटल से पहले वेरी. ही स्ट्रक द हॉर्स मोस्ट क्रूअली. द चिल्ड्रन इज टू यंग, यंग तो है कितने ज्यादा. ही स्पोक क्वाइट एंग्रीली, एंग्रीली मतलब गुस्से में बोला लेकिन ज्यादा. रामा इज अ rather lazy boy, do not speak so fast, you walk too quickly. The adverb enough is the only exception to this rule, for it always plays after the word which is modified. सिर्फ इस केस में इस रूल के अकॉर्डिंग एक एक्सेप्शन होता है वर्ड इनफ. ये इनफ इकलौता ऐसा वर्ड है जिस रूल का एक्सेप्शन है जो हमेशा उस मॉडिफिकेशन वाले वर्ड के बाद में लगाया जाता है. जैसे कि दिस हाउस इज लार्ज इनफ फॉर 10 people, तो लार्ज के बाद लग रहा है इनफ. स्पीक अलाउड इनफ टू बी हार्ड, स्पीक अलाउड ऑलरेडी वर्ब है तो उसके बाद लग रहा है इनफ. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल एज टू एग्जैक्ट पोजीशन क्या होती है वर्ब की जो मॉडिफाई करता है वर्ब इन अ सिंपल सेंटेंस. However, एक adverb generally भी placed होना चाहिए as near as possible the word, मतलब
जिस वर्ड के बारे में जिसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं, जिसमें एडिशन कर रहे हैं, उस वर्ड के पास होना चाहिए. लाइक फॉर एग्जाम्पल, ही वर्कड फास्ट, ही परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी क्रेडिटेबली. I could easily find it out. I have seldom seen such a thing. He never spoke to anyone. I feel this insult keenly. I shall certainly miss him. I shall be utterly undone. Note, notice that when a verb is transitive with an object, as in sentence third and fourth above, that verb creditably and keenly usually follows the object. अब जैसे इन्होंने ये सेंटेंस दे रखा है, इसमें वर्ड है आपका एक क्रेडिटेबली एंड सेकेंड इज कीनली. तो इन्होंने बोला है कि जब वर्ब आपका ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है जिसमें ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस के अंदर, तो थर्ड और फोर्थ सेंटेंस में दे रखा है, उसमें ऑब्जेक्ट है इंसल्ट एंड ड्यूटी. तो वहां पर यूजुअली जो द एडवर्ब यूजुअली फॉलोज द ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट को फॉलो करता है. वर्ब क्या है? कीनली और क्रेडिटेबली. Notice that the adverb is usually placed between the auxiliary verb and the main verb, as easily and certainly sentence. अब ये जो वर्ड certainly है and the word easily, ये लगाया गया है. तो जब एडवर्ब दोनों ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है, तो इन सेंटेंस तो हमें नोटिस करें कि एडवर्ब यूजुअली ऑक्सिलरी और मेन वर्ब के बीच में होना चाहिए. तो जैसे ये वाला सेंटेंस है, आई कुड इजिली फाइंड इट आउट, तो इसमें इन्होंने जो उसको प्लेस किया गया है, इट इज बिटवीन द ऑक्सिलरी वर्ब एंड द मेन. मेन वर्ब क्या है यहाँ पर? फाइंड, और ये ऑक्सिलरी. When an adverb modifies a sentence, it is usually placed in the beginning. जब जो एडवर्ब अगर सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, तो वो हमेशा बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस में लगाया जाए. एग्जाम्पल, फॉर्चुनेटली ही वॉज नॉट हर्ट. Unfortunately, he thinks too highly of himself. Certainly, you seem to be wrong. Finally, the robbers were nabbed. Ultimately, the student succeeded in clearing the word only is frequently misplaced. It should be placed immediately before the word it modifies. Only misplace हो जाता है frequently, कई बार उसको हम place करते हैं immediately उस word के बाद जहाँ पर आप उस word पे हमने modify किया. तो how the meaning of the sentence change with the position of adverb. Example, अब उस ओनली की पोजीशन को इधर उधर करने से ही कैसे चेंज आता सेंटेंस में. ओनली ही लेंट मी अ बुक, खाली उसने मुझे बुक लेंट करी. उसने करी, किसी और ने नहीं करी. ही ओनली लेंट मी अ बुक, ही लेंट इट, ही डिड नॉट गिव इट अवे. उसने मुझे बुक लेंट करी, किसी और को नहीं दी. ही लेंट ओनली मी अ बुक, उसने बुक सिर्फ मुझे ही दी और किसी को नहीं दी. So there is a difference in the sentences by just changing the position of adverb. तो एक ही adverb की पोजीशन को हम कई बार अगर चेंज कर देते हैं, आपको ऐसा लगता है कि ओनली इधर का इधर लगा दोगे तो नहीं फर्क पड़ेगा, बट इट मैटर्स. It completely changes the meaning of the sentence. Then comes the worksheet. Put the adverbs in the correct place around the following sentences and rewrite them. तो अब हमें ये जो adverbs दिए हैं, इनको हमें सही जगह पे लगाना है. We can succeed by hard work. तो we can succeed only by hard work. I came to return a book merrily. I merrily came to return a book. I did not want to come really. I really did not want to come. Similarly, you have to do the rest of the sentences. So I hope you all have understood the uses of adverbs and its kinds. So you can go through it once again and practice it. We will meet in the next video with the next chapter. Till then, bye bye. Take care.